दूसरा क्वेश्चन से लाइक दिस, सी ना क्वेश्चन वही है पर सी है ना, जस्ट चेक इट द वे ऑफ आस्किंग. क्लियर? यस, क्या होगा ये अल्टीमेटली व्हाट, चलिए आपका ये बन जाएगा यहाँ पे ऐसा. आप कहाँ आ गए? आप आ गए यहाँ पे. क्लियर ना? सो मतलब व्हाट, इसका भी आंसर यही है, इसका भी आंसर यही है. सो मतलब व्हाट, दैट्स व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. क्लियर? दैट्स व्हाट very very interesting questions. Now the what actually, yes, you know what, question number, next questions, question number 12 suppose. Yes, you know what, very very interesting questions. What is the answer? Yes, that CH2H, CH2H, CH2H. What is the answer here? Okay, so now what? If I say here, so what your answer is? Do you know what is the answer? Your answer is a benzene. What is your answer? Your answer is a benzene. So very very interesting questions. Clear? तो यहाँ पे हाउ इट इज टेकन प्लेस. क्लियर? तो सबसे पहले व्हाट एक्चुअली सपोज यहाँ पे क्या होगा, आई एम गोइंग टू व्हाट टेक द एग्जांपल व्हाट स्टेप बाय स्टेप्स. क्लियर? CH2 प्लस वही है ना, निकल जाएगा 1 2, क्या होगा रिंग एक्सपांड्स. क्लियर? आपका रिंग एक्सपांड हुआ तो क्या हुआ, दैट्स अ CH2 CH2H and CH2H. Clear? Is this? Let us rewrite. तो क्या होगा, ये आपका आ गया is this. Clear? Again for the CH2H क्या होगा 1 and 2. क्लियर? ये बॉन्ड या फिर ये बॉन्ड. क्लियर ना? तो कौन सा बॉन्ड होगा एक्सपांड? यस ना, बट ये वाला बॉन्ड होगा. ओके क्यू सर, तो ये बॉन्ड एक्सपांड क्यू सर. लेट अस सी, मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला बॉन्ड शिफ्ट क्यू. अगर मैं वो बॉन्ड को शिफ्ट करता हूँ ना, व्हाट आई गेट, आई एम गेटिंग द व्हाट अलाइलिक कार्बोकैटायंस. आई एम गेटिंग द व्हाट अलाइलिक कार्बोकैटायंस. यस, मतलब व्हाट, हाँ इसलिए वो स्टेबल था, इसलिए वो वाला बॉन्ड शिफ्ट हो. क्लियर ना? मतलब व्हाट, जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मिंग कार्बोकैटायंस मस्ट बी मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन. क्लियर? यस. और आपकी रिंग एक्सपांड भी हो गई. क्लियर? यस. इज दिस क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपका H है. ओके, लेट अस रीराइट. इसको हम लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे. क्लियर? ये आपका प्लस चार्ज है, सो यहाँ आपका होगा -H प्लस होगा. तो क्या होगा आपका CH2H. क्लियर? अगेन फॉर द क्या होगा, CH2 प्लस 1 and 2 को भी बॉन्ड को शिफ्ट करो. राइट? CH2 and the what, let us rewrite. ये क्या होगा, ये आपका होगा ऐसा. What is the answer? Your answer is a benzene.
What a very interesting questions. Yes, that's a what it is a what it is a throughout your mechanisms. Yes, it is a what it is a throughout your mechanisms. So you know what, it's a very interesting examples. Yes, एग्जाम में ये होता है ना what क्वेश्चंस इतने वो होते हैं स्लाइटली ट्विस्टेड होते हैं, राइट? नाउ द व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चंस. Concentrate H2SO4. Yes, what is your answer? Yes. What is your answer? You know what, again that's a what very interesting question, superb questions. Clear? Yes, क्या आएगा आंसर? Yes, what happens here as it is? Clear? Now, what happens? 1 2 फिर क्या होगा? That the ring is going to expand. That ring is going to expand. और ये जो होता है ना, what happens, you know, it is what it is, you know what, taking place simultaneously. Clear? ये तो मैं आपको ना what mechanism के लिए मैं आपको ना what individual OH group को दिखाता हूँ. But reaction में क्या होता है? Reaction में what the each and every step what taking place all are simultaneously. Mechanism में ये होता है. But actually for the understanding मैं आपको step by step दिखा रहा हूँ. Clear? बाकी एग्जाम बाकी रिएक्शंस में क्या होता है? एवरीथिंग हैपेंस इन द इन सिटू. तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस अंडरगो द व्हाट रिंग एक्सपांशन. तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस चार्ज माइनस एच प्लस, व्हाट हैपेंस? यहाँ आपका आ जाएगा आंसर ये. सॉरी, is this clear? Now what for the again for the this clear? आपकी मैकेनिज्म वही रहेगी. क्लियर ना? तो मैकेनिज्म इससे है. तो यस, अल्टीमेटली व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज that is your answer. That is your answer. That's what very interesting questions. Superb. Clear? So मतलब what I'm not going to taking photo of these mechanisms. यहाँ again फिर से वही होगा 1 and 2 ring expansion. Clear? Ring expand होगी minus H plus. Again what ring expansion minus H plus. What your answer is this? Clear? So मतलब what that's what a very interesting questions. Right? Now the what happens? ये तो हमने देखा what about the what dehydration of alcohols. ये हमने उसके क्वेश्चन देख लिए. Now the questions is what actually that's like yes. Yes, that's the Cl and the what the written in the here in the what aqueous KOH है. what ये बहुत important चीज़ है. yes, कि आपको एरो पे क्या लिख के दिया गया है ना, व्हाट दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट. यस, दैट व्हाट दे मेंशन टू यू एक्वस केओएच.
तो व्हाट हैपन्स विद द व्हाट एक्चुअली एक्वायर्स KOH? यस है ना, व्हाट प्लीज है ना, व्हाट हम इसको समझ लेंगे कि एग्जाम में है ना व्हाट, यस एग्जाम में एक्चुअली अगर आपको दिया गया है एक्वायर्स KOH, ओके यही चीज़ को वो लोग ऐसे लिखते हैं KH एक्वायर्स। सो डोंट बी कंफ्यूज प्लीज है ना, व्हाट ये दोनों चीज़ एक ही है, ये दोनों चीज़ एक ही है, क्लियर। समटाइम्स व्हाट दे मेंशन अल्कोहलिक KOH, मतलब KOH इथेनॉल, यस। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, क्लियर, KOH मिथेनॉल। तो ये इसका मतलब क्या है ना, ओके तो सर हाउ डू वी गेट द आइडिया, हमें करना क्या है? यस सी है ना एक्वायर्स KOH मतलब व्हाट, द KOH इज डिजोल्व इन द वाटर, द KOH डिजोल्व इन द वाटर। तो व्हाट हैपेंस हियर, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या करता है, वाटर एक्चुअली व्हाट हैपेंस, द कंसंट्रेशन ऑफ द OH माइनस इज डिक्रीजेस, यस। सो व्हाट हैपेंस एक्वायर्स KOH, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अगर आपका अल्कोहलिक KOH दिया है तो व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट, दैट्स एक्ट एज अ बेस, एक्ट्स एज अ बेस, यस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यस। व्हाई, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज नॉट डाइल्यूट हियर, है ना, यहाँ पे व्हाट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द OH माइनस इज नॉट डाइल्यूट हियर। तो अगर आपको अल्कोहलिक KOH दिया है तो क्या होगा, दैट एक्ट एज अ बेस, बट अगर आपको एक्वस OH दिया है तो व्हाट हैपेंस, वो क्या है आपका सोर्स ऑफ OH माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यस। वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, यस ना, यस सी ना व्हाट, ये सब फंडामेंटल्स आपको सीखना है, यस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना नॉट टफ, एक्चुअली हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, हमें आता नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, ये वो ब्ला ब्ला, और आप बहुत सारे आपके सीनियर भी हो गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है। सी इट्स नॉट टफ, व्हाट डू यू हैव, आपके पास समरी नहीं है, आपके पास बॉक्स रूल नहीं है, दैट्स व्हाट एक्चुअली यू फीलिंग दैट एक्चुअली कि अब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है। योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट अ हार्ड एक्चुअली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी, बट यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप्स। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे देन एंड देन एक्चुअली यू कैन रॉक एक्चुअली इन द केमिस्ट्री, क्लियर, राइट। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, अगर एक्वस KOH है तो व्हाट हैपेंस, वहाँ पे क्या है, द OH माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर अल्कोहलिक KOH है तो क्या होगा, इट इज एक्ट एज अ बेस, क्लियर, ओके, यस। टू द पॉइंट हियर, यस। तो यहाँ हमें करना क्या, ओके, यहाँ आपको दिया गया क्या है, आपको दिया गया है एक्वायस KOH, यहाँ आपको दिया गया है, मतलब व्हाट, यस, KOH इन द वाटर, व्हाट हैपेंस ना, व्हाट हमने पढ़ा भी था, जनरेशंस ऑफ कार्बोकैटायंस, द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायंस, यस। अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ द प्रोटिक सॉल्वेंट्स, alkyl halide in presence of the protic solvents, what happens is going to form the formations of carbocations. Alkyl halides in presence of the protic solvents क्या होगा, it formations of the what, carbocations। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे what आपका यस ना, what protic solvent है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ आपका फॉर्म होगा ये, CH2+, यस, मतलब what, टस्टी पार्ट्स। आपका जो Cl है वो Cl आपका निकल गया और क्या हुआ, आपका यहाँ बन गया एक्चुअली व्हाट दिस, ओके, Cl क्या निकला, Cl निकला एज अ न्यूक्लियोफ्यूज, है ना, व्हाट हमने बात भी किया था ना, व्हाट यस, कि लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स विद द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लिविंग ग्रुप अपने बॉन्ड पेयर को लेकर निकलता है, लिविंग ग्रुप डिपार्ट, तो व्हाट, दैट्स अ नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोफ्यूज, दैट्स अ व्हाट नोन एज न्यूक्लियोफ्यूज, क्लियर। सो व्हाट, ये चीज़ भी अपने माइंड में फिट कर देना, क्लियर, राइट, ये है ना। यहाँ पे क्या होगा, इज दिस, यस, अगेन व्हाट हैपेंस, हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट से आपका ये आ जाएगा, इज दिस, अगेन व्हाट, 1 and 2 रिंग एक्सपांसन, तो क्या होगा, इज दिस, यस। सो मतलब व्हाट हैपेंस हियर, लेट अस रीराइट, is this, now the what again 1 2 क्या होगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, ये आपका आएगा चार्ज पॉजिटिव, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ओके, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ तो क्या है आपका एक्वस KOH, तो क्या होगा, इट इज अ व्हाट, इट इज एक्ट एज अ व्हाट एक्चुअली द सोर्स ऑफ द OH माइनस। यहाँ पे व्हाट इज आंसर, योर आंसर इज
दैट इज योर आंसर। यस, मतलब व्हाट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन। यस, मतलब व्हाट, ये अपने माइंड में फिट कर दो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्वस KOH एंड द अल्कोहलिक KOH? क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्वस KOH एंड द अल्कोहलिक KOH? अल्कोहलिक KOH क्या है? अल्कोहलिक KOH अगर दिया गया है तो मतलब व्हाट हैपेंस? यस, इट इज एक्टिंग एज अ बेस। अगर एक्वस KOH है तो व्हाट हैपेंस? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द OH माइनस इज डिक्रीजिंग ड्यू टू द व्हाट? अ डाइल्यूशन। क्लियर? तो व्हाट हैपेंस वहां पे? व्हाट द OH माइनस व्हाट? एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस इज एक्टिंग एज अ व्हाट? आपका न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। क्लियर? नाउ द व्हाट नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज example number 15. Next example is the what is this? CH3C CH3 CH3 CH2Cl वही aqueous KOH. What is the answer? Yes, वही polyprotic solvents क्या होगा? CH3 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 and the what? CH2 plus 1 and 2, तो क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट इज दिस, तो यहाँ पे क्या होगा? यस, क्या होगा आपका? 1 2 मिथाइल शिफ्ट। यस, what happens here? It is CH2 and the CH3. Is it further? No, अभी आगे आपका एलिमेंट नहीं होगा। तो what is the answer here? CH3COH, CH3 and the CH2 and the CH3. That is your answer. That is your answer. Clear? So what? Very very interesting questions. Clear? Very very interesting questions. Clear? Suppose what? Suppose okay, so now what? Or example. Suppose example number 16. Example number what? Actually 16. What is the questions? The questions is this. CH2Cl, CH2Cl, and the what? H plus. Yes. HCl. I'm sorry, actually it is a OH. I'm sorry, it is a what? HCl. Yes. What happens here? Yes, ना आपका OH भी है और H plus भी है, तो ऑब्वियसली what ये भी में पढ़ा था in the what? The formations of carbocations. कि अगर आपका alcohol in the acidic media, तो what happens actually? The OH become what? Is going to become OH2 plus. OH what? Is going to become OH2 plus. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ आपका बन जाएगा CH2 plus. Clear? But the questions arising 1 and 2, which bond is going to be shifted? कौन सा bond shift होगा आपका? ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड? ऑब्वियस व्हाट? मेरा ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा। व्हाई? बिकॉज ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करूंगा तो व्हाट? द फॉर्मेशंस ऑफ द व्हाट? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। यस, क्लियर? यस ना व्हाट? ओके, मैंने कहा था ना व्हाट 5 to 6 रिंग आपकी एक्सपांड होती है, बट कब होती है? व्हेन देयर इज अ व्हाट? व्हेन देयर इज अ ड्रिविंग फोर्स। यस, 5 to 6 आपकी रिंग एक्सपांड होती है, बट कब होती है? व्हेन देयर इज सम ड्रिविंग फोर्स। क्लियर? तो यहाँ पे कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज़ अ व्हाट? इट इज़ अ प्लस चार्ज। क्लियर? सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस? व्हाट इज द आंसर? योर आंसर इज दिस। ये आपका आंसर है। सो मतलब व्हाट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्लियर? इट्स अ व्हाट? इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। मतलब व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये जो रिएक्शन है ना, यही आपका रिएक्शन से व्हाट? टिफ्नोडिमेजो रिएरेमेटियस HNO2। तो यहाँ पे क्या होता है? NaNO2 and HCl, NaNO2 plus HCl, NaNO2 plus HCl।
ओके यहाँ पे व्हाट एक्चुअली आपका ये HNO2 है, वही आपका NO2 प्लस HCl. What is that? That's what in situ liberations of the HNO2. Yes, in situ liberation of the okay. What is the role behind? Okay, what is the role of that actually? अगर आपका aliphatic NH2 है, yes, तो what happens? The aliphatic NH2 in presence of the HNO2 what converted into N2 plus. Yes, keep it in the mind actually. You know what happens actually? That's a what aliphatic. That's a what converted into N2 plus. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा CH2N2 plus. CH2N2 plus. Clear? Is this? Yes. तो यहाँ पे क्या होगा? Yes. Now N2 is what? N2 is what? Now what? It's a better living group. तो क्या होगा? यहाँ is this CH3 CH3 and the CH3. What happens? That's the what? CH2 plus. Now the what? 1 and 2. तो क्या होगा? Is this? Yes ना what? 1 to methyl shift. ये तो हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा ही है. क्या होगा? That's CH3 and C plus and CH2 CH3. Okay is ना कैसे अरेंजिंग. अब नेक्स्ट क्या होगा? What you have here? Yes. यहाँ क्या है? यहाँ what is that? It is what? It is in aqueous media. It is in what? It is in the aqueous media. What you have? You have a water. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका the water act as a nucleophile. तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा OH. So what? That is the answer. That is the answer. CH3C, CH3CH2. That's OH. That is the answer. Clear? Very very interesting questions. Clear? Now the what actually? The next, suppose question number 18. Question number what? Question number 18. Yes. ये हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है. That's a what? NH2. That's a what? NH2. Yeah. That's a what? NH2 actually. That's a NH2 in the presence of the what? HNO2. Yes. In the presence of the what? HNO2. Then what is the answer? HNO2. What is the answer? Same as it is what? HNO2 का रोल क्या है? It is a what? It is a formations of the what? N2 plus. आपका N2 plus फॉर्म होगा. Now it is departs the formations of the what? It is a carbocations 1 and 2. What happens? What? Ring is going to be contract. Why? Because है ना आपका साइक्लोब्यूटाइल कैटायन से आपकी रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी. क्लियर? आपकी रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी. आई एम सॉरी एक्चुअली मैंने जो लिखा वो रॉन्ग है. आपकी रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? यहाँ पे आपका बनेगा CH2 plus. Okay, what is that? That is the what? It is an example of the what? A miscellaneous carbocation. It is an example of the what? A miscellaneous carbocation. So what your answer is? CH2OH. That is your answer. Yes. So the what? A very fantastic questions. Clear? But see, you know what? ऐसे questions को ना वो लोग बहुत से एंगल से ट्विस्ट करते हैं. How they are twisted? Yes, ना what? How they are twisted? Like this, ना what? जैसे क्वेश्चन से ही है CH2Cl ना what is C क्वेश्चन से ही है CH2Cl. yes. What they ask to you? Water मतलब ना water या water ethanol. yes, water ethanol या whatever is this. yes. तो क्वेश्चन what is the answer behind that? yes. यहाँ तो क्या है? यहाँ तो सिंपली आपका ओके जो अल्काइल हैलाइड से वाटर है तो क्या होगा एक्चुअली? दैट्स व्हाट सिंपली आपका निकल जाएगा CH2 प्लस और वही आपका आंसर आ जाएगा CH2OH. क्लियर? योर आंसर इज दिस. कैसे? व्हाट अबाउट दिस? कैसे? व्हाट वेरी वेरी टिक मार्क दिस क्वेश्चंस. व्हाट हैपेंस हियर? CH2 plus is going to be formed. CH2 plus is going to be formed. क्लियर? यहाँ पे क्या होता है? That's what actually this bond is a double bond and this is CH2X. Now तो what happens here? यहाँ पे आपका ये जो bond है that bond is what? A shifted to is this. yes. What happens? This bond is shifted to here. What happens here? अगर ये मेरा बॉन्ड वहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा?
formation of the what? Miscellaneous carbocations. Yes, my answer is same. So that's why I'm saying, you know what, tick mark these questions. Yes, you know what, because what एग्जाम में ये आपको क्लिक होगा ही नहीं. और यस, एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में यही आएगा, फिक्स है. नेट गेट का पैटर्न फिक्स है. What they want to ask? They want to ask that questions that's what slightly out of box. Okay, what exam? Okay, सर ऐसा क्यों होगा सर? Geometrically approachable as well as what आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, what happens? What उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है. क्लियर? Yes. So because of that, what your answer is this? क्लियर? यहाँ से आपका बॉन्ड शिफ्टेड वहाँ होता है. क्लियर? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स. क्लियर? ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट्स है. क्लियर? नाउ द व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज that's the what actually 18. Then the what next questions is this. Next questions. Then the what? CH2NH2. Yeah, the CH2NH2. CH2NH2. Yes. What happens here? Yes, same as it is. आपका NH2 N2 plus. Clear? Right? तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. ओके, ऐसा ना व्हाट सी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा. बिकॉज सीधा मैं जंप करूँगा तो यू डिडंट गेट द आइडिया ना, आपको इतना आइडिया नहीं आएगा. क्लियर? ये वर्ड वहाँ से होगा एज इट इज ना वर्ड. ओके, अगर आपको इज दिस एक्चुअली ना, इज दिस N2 प्लस होगा. क्लियर? N2 प्लस इज डिपार्ट, आपका N2 प्लस निकल जाएगा. क्लियर ना? व्हाट हैपेंस? N2 प्लस इज डिपार्ट्स. क्या हो जाएगा? N2 प्लस इज डिपार्ट्स ना, एज इट इज. व्हाट हैपेंस? 1 2 1 and 2. सो मतलब व्हाट? बॉन्ड नंबर 2 इज गोइंग टू व्हाट? एक्सपांड हियर. द बॉन्ड नंबर 2 इज व्हाट? एक्सपांड हियर. यस. तो यहाँ पे क्या होगा? अगर बॉन्ड नंबर 2 एक्सपांड होगा तो क्या होगा? इज दिस फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड दिस. सी अगेन व्हाट? अगेन दिस 1 2. द बॉन्ड इज एक्सपांडेड. द बॉन्ड इज एक्सपांडेड. ठीक है? तो क्या होगा? Clear? Again, what happens? 1 2. The bond is expanded. Clear? आपका bond expand होगा. What is the answer? Is this clear? Again. 1 2. बॉन्ड इज गोइंग टू एक्सपांडेड. क्या होगा? दिस. अगेन देयर इज अ व्हाट? 1 2. That's a what? It's a plus charge. Yes. See, अब होगा? No. Now that's not possible. So what? Now what is your answer? Your answer is that's a OH and that's a methyl. Yes, that is the answer.
So what very interesting questions. Clear? What very interesting questions. Clear? Yes. So what one of the most important questions. Clear? Okay. Now the what happens here? Next questions. Suppose that's what HNO2. Yes, that's what HNO2. What happens here? Same as it is. What is the role? It is a CH2 plus. Okay na? I'm going to what? Write directly. Clear? I'm going to what? Write directly CH2 plus in the parts 1 and 2. मतलब what A bond shift होगा या फिर A bond shift होगा. Is it possible to ring expansion? Let us see. Is it possible to ring expansion? हाँ, यहाँ आपकी ring expands होगी. Why actually? Because the next forming cations बन रहा है. वो क्या बन रहा है? Substituted carbocation. नेक्स्ट आपका जो बन रहा है इट इज व्हाट सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बन रहा है. क्लियर? नेक्स्ट आपका जो बन रहा है इट इज व्हाट सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन. यस. सो व्हाट लेट अस रीराइट क्या होगा? दैट्स द प्लस एंड द OH. सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस हियर? या व्हाट द माइनस H प्लस. तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर? योर आंसर इज साइक्लोहेक्सानोन. What is the answer? Yes. Now what very fantastic, superb questions. Clear? Very fantastic and the what? A superb questions. Clear? See, you know what? अब यही questions है ना. What मैं आपको देता हूँ homework. That's your homework. Yeah. That's your homework. That's your homework. Clear? Next. HNO2. What is the answer? Your answer is heptanone. Yes. No what? मैंने पढ़ाई था कि रिंग नंबर 6 to 7 रिंग एक्सपांड नहीं होती है. रिंग नंबर 6 to 7 रिंग एक्सपांशन do not take place. Yes, but here it is feasible. It is feasible here. Clear? So मतलब what? One of the most important questions. Now the what? Next questions is this. Suppose आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज what is the answer? Yes, you know what? Very interesting question. Superb. Listen to what? See, it's AlCl3 is what? It is a Lewis acid. Again, it is a what? A halogen carrier. ना? Again, it is a what? Lewis acid. तो उसका रोल क्या है? वो what? आपको Cl को निकाल देगा. Clear? Now the what? Cl को वो निकाल देगा. Then what happens here? Okay, Cl को तो निकाल दिया. But is it stable? No. It is undergo the what? 1,2-methyl shift. Yes, it is undergo the what? 1,2-methyl shift. हाँ, वो आपका एक stable actually आपका कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा. Yes. आपका स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा. सो यहाँ पे क्या होगा? दैट्स व्हाट फॉर्म्स इट्स प्लस. तो यहाँ पे ना व्हाट लेट अस रीराइट इज दिस प्लस. यस. व्हाट इज दिस? इट इज अंडरगो व्हाट? इंट्रामोलिकुलर फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस. यस. क्योंकि वहाँ तो आपको क्या था ना वो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस? यू वांट द A प्लस. यस. तो यहाँ पे व्हाट? यस, इट इज अंडरगो द व्हाट? इंट्रामोलिकुलर फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन. सो व्हाट इज द आंसर? योर आंसर इज then the what? Minus H plus. So ultimately what? Yes, it's regain the aromaticity and the what? Your answer is this. That is your answer. So what? Very interesting question. Superb. Very interesting question. Superb. Clear? Right. Now the what? Next question is suppose
Yes. डाल मतलब what is that? This is what? It is an example of the what? Pinacolon rearrangement. Yes. It is an example of the what? Pinacolon rearrangement. Yes. Clear? यहाँ पे same as it is. It's a what? Symmetrical alcohols है, तो मतलब what? कहीं पे भी आपका वो अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? OH become OH2 plus और OH2 plus what? It departs. Clear? Positive charge 1 and 2 मतलब what? The bond is shifted. Clear? Yes. Yes, the bond. K.C.SIR arising. Is it the ring contract? हाँ, यहाँ ring contract आपकी होगी. क्यों होगा? Yes. Suppose what? ये आपका bond shift suppose यहाँ हुआ. Suppose तो क्या होगा? Okay. दोनों symmetrically है तो मतलब what? Bond कहीं से भी shift करो. Doesn't matter. Yes. कि यहाँ पे जो है ना cation बन रहा है वो क्या बन रहा है? What is that? It is a what? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन. यस. सो मतलब व्हाट? हाँ, आपकी यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है. यस ना व्हाट आई एम सेइंग ना व्हाट? यस, रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी बट कब? व्हेन देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स. यस. मतलब व्हाट? वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यस, योर आंसर इज यस, दैट इज योर आंसर. यस, दैट इज योर आंसर. हाँ, यस, आपकी रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ द व्हाट? ड्राइविंग फोर्स. बिकॉज ऑफ द व्हाट? बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स. क्लियर? Because of what? Because of driving force. Clear? Another word. Next questions. That's CH2. And the what? OH CH2OTS. CH2OTS. No, that's a what? Also what? It is the net questions. ये भी आपका क्वेश्चन नेट का ही है. CO3. Yes. CSIR. Yes. What happens? See now what? It's a what? It is the example of the what? Semi-pinacolon rearrangement. It is the example of the what? Semi-pinacolon rearrangement. Yes. OTS क्या होता है? OTS is departs. Clear? OTS आपका निकल जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है? What happens? What? Now what? Yes, your OTS is going to departs. The OH and the what? CH2 plus. Questions arising. Is it the ring expansion? हाँ, यहाँ ring expand होगी. क्यों? बिकॉज देखो है ना व्हाट 1 and 2. सो मतलब व्हाट? दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. ओके, तो वाई द रिंग एक्सपांशन इज फेवरेबल हियर. यस, बिकॉज नेक्स्ट फॉर्मिंग जो कैटायन बन रहा है वो क्या बन रहा है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन. यस. यस, मेरा नेक्स्ट जो फॉर्मिंग कैटायन बन रहा है वो क्या बन रहा है? इज दिस. यस. It is a what? Substituted carbocations. Yes. So what is my answer here? My answer is that is the answer. Yes. So मतलब what? Very interesting questions. Clear? Very interesting questions. Clear? Next questions. Yes. Yes. Next questions is also what? One of the most important questions. ऑलरेडी और नेट में आ भी चुका है. ऑलरेडी नेट में आ भी चुका है. तो दैट्स नो व्हाट? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. यस नो व्हाट? वेरी सुपर क्वेश्चंस. द वे ऑफ आस्किंग इन द नेट इज वेरी इंटरेस्टिंग. H2. क्लियर? जस्ट H2. क्लियर? ओके. सी ना व्हाट? सी एग्जाम में से जैसे होते हैं टफ क्वेश्चंस. एग्जाम में क्या था ना, एग्जाम में उनका पूछने का तरीका बहुत अलग था. यस ना, एग्जाम में व्हाट? एग्जाम में उन्होंने आंसर भी दिया था. यस, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है. यस ना व्हाट? स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रिटन. व्हाट हैपेंस हियर? यस ना, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटन. पर कैसे अरेंजिंग? सर यहाँ तो कैटायन बन रहा है सर, यहाँ तो रिटर्न कैसे होगी? है ना व्हाट? हमने तो पढ़ा था कि जब भी अगर आपका कोई ऐसा है और अगर वहाँ कैटायन बन रहा है. यस, यहाँ व्हाट? कैटायन बन गया तो व्हाट हैपेंस?
अंडरगो रेसिमिक पन्नम ना, ये एक लौता एग्जाम्पल है यस, कि ये SN1 होते हुए भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, टिक मार्केट एग्जाम में आ गया है, स्टिल फिर से एग्जाम में आ सकता है यस, ये एक लौता ऐसा एग्जाम्पल है। हाँ, ये SN1 होते हुए भी यहाँ पे व्हाट हैपेंस, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस होती है। क्वेश्चंस अराइजिंग क्यों, व्हाई द क्वेश्चंस अराइजिंग क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स ज्योमेट्री। यस, कि यहाँ पे व्हाट बेसिकली आपका जैसे ये वाला यहाँ H है, ये वाला यहाँ H है और ये वाला यहाँ H है यस, व्हाट हैपेंस हियर कि यहाँ बेसिकली ना उसका जो ज्योमेट्री ना, उसका जो दैट्स ना व्हाट इंटरमीडिएट्स, इट्स व्हाट ना इट्स व्हाट इट इज अ क्राउडली हिंडेड फ्रॉम द बैक साइड्स। तो यहाँ व्हाट है ना, व्हाट यहाँ आ गया जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, उसके लिए एक ही रास्ता बचा है आपका, जो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उसका एक ही रास्ता है कि वो अटैक करे फ्रंट साइड से। भाई पूरा का पूरा बैक साइड इज क्राउडली हिंडेड, द बैक साइड इज व्हाट क्राउडली हिंडेड, सो मतलब व्हाट देयर इज ओनली वन वे, उसके पास एक ही वे है टू अटैक फॉरवर्ड, अटैक ऑफ द व्हाट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फ्रंट साइड, दैट्स व्हाई हैपेंस है ना व्हाट, दैट इज द व्हाट हैपेंस हियर। यहाँ व्हाट आपका SN1 रिएक्शंस होते हुए भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस यस, मतलब व्हाट ये आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है। हाँ, इट इज़ ए एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शंस। हाँ, इट इज़ अ व्हाट, यहाँ पे आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस होता है यस, SN1 होते हुए भी। वाई, बिकॉज व्हाट उसका जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इंटरमीडिएट व्हाट इज हाईली क्राउडेड फ्रॉम द बैक साइड्स, highly crowded what from the back side, so because of that actually what happens actually कि आपका यहाँ पे what retention of configuration होता है yes, तो what one of the most important questions, clear right। next हम जाएंगे what happens next हम जाएंगे, it is a what, it is a transannular hydride shift yes, next हम जाएंगे what a transannular hydride shift yes, इस ना व्हाट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग है ना व्हाट, बिकॉज ना व्हाट सी हमने अभी तक पढ़ा है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक यही पढ़ा है कि आपके जितने भी रीअरेंजमेंट है वो 1-2 है यस ना, ओके सही भी है, आपके 90% रीअरेंजमेंट आर 1-2, 90% आपकी जो रीअरेंजमेंट ओके, बट कुछ रीअरेंजमेंट ऐसे है हाँ द व्हाट बियॉन्ड 1-2 काम कर रही है, दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट ट्रांसएनुलर हाइड्रेशन ओके, बट कब होगा ऐसे ना व्हाट 1-3 शिफ्ट 1-4 शिफ्ट ओके, व्हाट ये बेसिकली क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ 1-4 1-5 1-6 hydride shift yes, it is an example of 1-6 1-5 and the what 1-6 hydride shift yes, it is an example of the what 1-4 1-5 and 1-6 hydride shift okay yes, how it is oh that's why that's why हम इसको बोलते हैं what a long distance hydride shift, that's why what हम बोलते हैं उसको long distance hydride shift, हम बोलते हैं what long distance hydride shift yes, clear okay। why it is feasible, because what वो feasible क्यों होता है yes ना, because सबसे most important यही चीज़ है भाई, जब तक मेरा ज्योमेट्रिकली अप्रोच ही नहीं होगा हाउ इट इज फिजिबल यस, तो मतलब व्हाट यहाँ पे व्हाट आपके जितने भी कंपाउंड्स है व्हाट हैपेंस वो ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल होते हैं, व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम व्हाट अ ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल यस, तो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। हाँ, आपके ट्रांसएनुलर हाइड्राइड शिफ्ट व्हाट जहाँ ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल होती है वहाँ ये होता है, क्लियर। उसका लेट्स गो एग्जांपल्स, उसका एग्जांपल है ये H प्लस यस, दैट्स क्लियर। यहाँ तो व्हाट आपको दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं भी आपको H2 प्लस डजंट मैटर, क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे OH2 प्लस होगा और यहाँ आ गया व्हाट, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, वहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, जैसे ना व्हाट OH बिकम OH2 प्लस
क्या हुआ, OH बिकम OH2 प्लस, और वो आपका एज अ वाटर निकल जाएगा, माइनस वाटर वो माइनस वाटर वो निकल जाएगा, क्लियर, यस। व्हाट इज दिस, नाउ द व्हाट, यस व्हाट हैपेंस हियर, यस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यस व्हाट हैपेंस, आपकी 1,6 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, मतलब व्हाट, दैट हाइड्राइड इज शिफ्टेड टू हियर, यस, व्हाई, बिकॉज ऑफ व्हाट इट्स शेप, उसका शेप ऐसा है, उसका शेप ऐसा है ना, what happens no what the both are coming what geometrically approachable, so because of that what that hydride is shifted to what on the one positions, yes, तो यहाँ पे क्या होगा, that hydride is shifted to what on the one positions, तो यहाँ पे क्या होगा, that's the what formations of, that's a hydride and that's a hydride and the what OH and the plus, OH and the plus, so ultimately what, then what, minus H plus, so what is your answer, your answer is, that is your answer, clear, that is your answer, clear, so मतलब what, very interesting question, superb, clear, yes ये आपका example of the what, example of the what 1,6 hydride shift, ये क्या हुआ यहाँ पे आपका, यहाँ आपका हुआ 1,6 hydride shift हुआ, क्या हुआ, 1,6 hydride shift हुआ, clear, now the what, no same ऐसा ही क्वेश्चन से, same ऐसा ही क्वेश्चन से, सपोज यहाँ क्या है, यहाँ आपका मिथाइल आ गया है, मिथाइल OH and the HOH, then H plus, then what is the answer, yes, मिथाइल OH and then what, HOH, then what is the, okay, so please what यहाँ पे don't be confused with this, what sometimes also they can mention dilute H2SO4, है ना, so don't be confused with that कि H2SO4 आ गया मतलब what मुझे एलिमिनेशन करना है, no, अगर डायोल आ गया ओके, अगर डायोल है जैसे ना इट इज डायोल, यस, अगर आपको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, यस व्हाट हैपेंस, अगर डायोल है तो आपको एक्चुअली पिनाकोल रीअरेंजमेंट ही करना है, क्लियर, सो डोंट बी कंफ्यूज, है ना व्हाट, यहाँ पे आपका दैट्स अल्किन फॉर्म मत कर देना, क्लियर, यहाँ पे देना दैट्स, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट एक्चुअली, क्लियर, यहाँ पे क्लियर, ओके, कैसा राइजिंग, यहाँ कौन सा वाला OH मेरा होगा, प्रोटोनेट्स, यस, कौन सा, ये वाला OH, क्यों, बिकॉज ये वाला जो OH होगा, व्हाट हैपेंस, मेरा जो फॉर्मिंग कैटायन बन रहा है, कि क्या बन रहा है, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, अ मच मोर स्टेबल, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, अ मच मोर स्टेबल, is going to become what, a much more stable, H and the OH, again as it is 1 2 3 4 5 6, ओके, ऐसे ही ना व्हाट सेम, कि यहाँ पे आपका ये शिफ्ट विजिबल क्यों हुआ, बिकॉज ये जो बन रहा था ना, एक क्या बन रहा था, दैट इज द व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, यस, यहाँ भी व्हाट, यहाँ भी आपका 1 से एड शिफ्ट हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इट इज द व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन इज दिस, यस, सो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर हियर, हियर माय आंसर इज CH3H is this, yes, that is my answer, so मतलब what, it is the example of the what, a transannular hydride shift, yes, तो यहाँ पे what is, यहाँ पे what happens, हमने यहाँ पे ना what different types of the example of the carbocations देख लिया, yes, I think almost हमने बहुत number of example देख लिए, तो I think ये अभी यहाँ आपकी गलती नहीं होगी, क्लियर, यहाँ almost हमने सब example कवर कर लिए, वेगेना मेरविन, टिफ्नोडिमेंजोस एंड द व्हाट आपका दैट्स पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ऑलमोस्ट हमने ये सब एग्जांपल यहाँ पे कवर कर लिए, क्लियर, सो मतलब व्हाट, इट इज अ बेसिक आइडिया अबाउट द व्हाट योर कार्बोकैटायंस, नेक्स्ट हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द व्हाट कार्बोनाइंस।